Everyone. So today we have a new problem which name is play with R. So let's read the problem statement. You are given an array of ARR of length n. You have to reconstruct the same array ARR in place. The ARR of I after reconstruction will become ARR of I or ARR of I plus 1. Or is the bitwise operator, and here you can see or is a bitwise or. If 4 was I or I plus 1 doesn't exist, then do nothing. No change in data. Okay, so let's see the example. N equals to 5. Here what I have to do is AR of I equals to AR of I or AR of I plus 1. So basically यहाँ पे भी लिखा हुआ है AR of I और AR of I plus 1 करना है, और अगर एंड वाले पर पहुंच चुका हूँ मैं, आगे वाला है नहीं, तो उसको डायरेक्ट एनर मतलब प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सो 10 क्या होगा जाएगा 10 और 11। सो एट इंडेक्स 0 AR of 0 और AR of 1, 10 इक्वल टू 10 और 11, सो 11 हो जाएगा। 11 इक्वल टू 11 और 1, सो 11 हो जाएगा। 1 इक्वल टू 1 और 2, 3 हो जाएगा। एट इंडेक्स टू AR2 और AR3, तो 3 हो जाएगा। एट लास्ट इंडेक्स मैं 3 पर पहुंच चुका हूँ, तो आगे कुछ है नहीं, इसलिए डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे। सो नाउ माय न्यू एरे इज 11 11 3 3 3। सो बेसिकली करना क्या है, AR ऑफ आई को AR ऑफ आई और AR ऑफ आई प्लस 1 करना है। सो इट्स अ वेरी सिंपल कोड। सो लेट्स डू द डायरेक्ट कोड. So what I will do is I'll apply a loop, and the loop will go from 0 to n minus 1. Why n minus 1? Because this should be, because last element will not change, because आगे कुछ है नहीं, इसलिए लास्ट एलिमेंट चेंज नहीं होगा। सो जीरो से लेके यहाँ तक टू, ये वाला इंडेक्स है ना, कुछ 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स तक चलेगा लूप, और लास्ट वाला इंडेक्स डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स डू द कोड फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n minus 1, then I plus plus, and now I have to change AR of I equals to AR of I plus I or AR of I plus 1, and last index will be same, so no need to change in that. So return AR of. So this was the 2 or 3 line code. So let's run this. As you can see, it is working perfect. Let's submit this code. So it is working perfect. So this was the complete code, 2 or 3 line code. What I have done is I have applied a loop, and I have checked like AR of I equals to AR of I or AR of I plus 1. So this thing I have done, and finally we have written our ARR. So this was the complete code. If you find this helpful, then please like, share and subscribe. Bye.